क्या संवेदनशील। सर तो उनको ये तो लगता है कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। दोनों मेरे सर भांजे हैं, दोनों मेरे। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, डॉक्टर अमित बजाज भी आ गए। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग आई शुड से। तो बस हम लोग शुरू कर सकते हैं। एक दो मिनट और देख लेते हैं। कुछ लोग अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक दो महिलाएं आने आ जाती तो अच्छा होता। अ, वरना हम शुरू कर सकते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं सबको बता चुका हूँ कि तीन तीन स्किल आपको खूब अच्छी तरह से आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आप आज का सेशन बहुत एंजॉय करेंगे। नंबर वन है वॉल्ट्री स्टैमरिंग। तो क्यों ना हम अपने नाम पे एक बार वॉल्ट्री स्टैमरिंग कर लें, सब एक साथ। कैमरा ऑडियो सब ऑन करके अपने नाम पे एक एज ए वार्म अप। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो तेंद्र, सब कर लें एक साथ। हाँ विनायक। हाँ क्या। विनायक। अमित। विकास। क्योंकि आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज डॉक्टर अमित जो बताएंगे, वो उसका पहला स्टेप यही है कि आपको जानबूझ के ब्लॉक में जाना है। तभी तो आप उससे बाहर निकलने का क्या प्रोटोकॉल सीख पाएंगे। तो अभी एक बार और करेंगे ये वॉल्ट्री स्टैमरिंग अपने नाम पे एक साथ करेंगे, थोड़ा और लंबा करेंगे। उसमें रुकेंगे कुछ देर के लिए। 1 2 3। अमित। केंद्र। रजत। गुड। विकास। यथार्थ आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बॉस के साथ तो नहीं है जो इसीलिए आपने वीडियो ऑफ कर रखा है और किया भी नहीं वॉल्ट्री स्टैमरिंग अपने नाम पे? यथार्थ, आर यू इन योर ऑफिस? अच्छा, राहुल भी आ Sir, गया। actually, राहुल। I'm from my phone. Actually, I'm from my phone, and right now I'm trying to connect to my laptop. So that's why that. फाइन, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। इस बीच में Yeah. अपने नाम से वॉल्ट्री स्टैमरिंग करते रहना जरा। राहुल, आप समझ गए आज क्या बात हो रही है? आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसिलेशन के बारे में। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वॉल्ट्री स्टैमरिंग करना जान लें। तो एक बार वॉल्ट्री स्टैमरिंग करके दिखाइए अपने नाम से फटाफट। उसके बाद आई विल बी हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर अमित। मेरा नाम राहुल संगेलिया है। सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते सर। ठीक है, ओवर टू डॉक्टर अमित। ओके, वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं स्टार्ट शुरू करना चाहता हूँ थोड़ी सी थियोरी से। थोड़ा सा समझ लें कि क्या कैंसलेशन टेक्निक क्या है, उसका क्या पॉइंट है, क्या फायदे हैं इसके। तो यहाँ पे कई लोगों ने कोशिश की है, ट्राई की है। मैं जानता हूँ कि मास्टर क्लास में रजत था पिछली बार, और एक्चुअली अर्जुन ने भी ज्वाइन किया था। तो एनीबॉडी हु नोज अबाउट कैंसलेशन, जो जानता है कि क्या है टेक्निक, क्या है, तो आई वांट टू गिव समबडी अ शॉट। तो ये बताइए लोगों को कि कैंसलेशन क्या है और किस लिए है, उस टेक्निक में हम क्या करते हैं और किस लिए करते हैं। एनीबॉडी? Yeah, so I can share that. Cancellation एक पोस्ट ब्लॉक करेक्शन टेक्निक है, जिसमें हम फर्स्ट टाइम जैसा स्टैमर हो रहा है, नॉर्मली स्टैमर्ड वॉइस के साथ वो वर्ड बोलते हैं, फिर हम उस सेम वर्ड को दोबारा बोलते हैं बाय यूजिंग एनी ट ट टेक्निक। तो जैसा कि नाम से प प प्रतीत हो रहा है कि कैंसलेशन की
जो एक हमारा यूजुअल वे ऑफ स्टैमरिंग है उसको कैंसल करना। एंड ये एक मोटा मोटा डेफिनेशन है। थैंक यू विकास। तो जस्ट टू बी श्योर कि रुकना नहीं है जब हम हकला रहे हैं, हकलाहट के बीच में नहीं रुकना, हकलाहट के बाद रुकना है। और रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंडेंसी क्या होती बॉडी में कि हमारी जो टेंडेंसी है कि हम या तो यूजुअली, नॉट एवरी टाइम, लेकिन यूजुअली स्टैमरिंग को इधर सर्कमवेंट करते हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं किसी सिचुएशन में, और अगर अवॉइड नहीं हो सकती तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। और कंडीशनिंग के लिहाज से अगर हम सोचें, अगर लर्निंग थ्योरी के लिहाज से हम थोड़ा सा सोचें, कंडीशनिंग क्या चीज है स्टैमरिंग में, और जो हैबिट, जो फॉर्मिंग जो चीज है जो स्टैमरिंग एक्सपीरियंस में, वो यही है कि जब हम पुश करके आगे बढ़ते हैं तो जो पुशिंग जो है वो रीइंफोर्स हो जाती है। जो भी आखिरी चीज हमने की है हकलाहट से आगे बढ़ने के लिए, वो चीज जो है वो रीइंफोर्स हो रही है एवरी टाइम। और सो वी आर क्रिएटिंग, देयर इज अ रिवॉर्ड सिस्टम इन द बॉडी, and the reward system is that there is an intrinsic reward to moving forward. आगे बढ़ना किसी भी मोटर एक्टिविटी में है, वो सेल्फ रिवॉर्डिंग चीज है। रुकना जब हम रुकना चाहते हैं, आगे बढ़ना जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, these are self rewarding notions. This is a self perpetuating behavior. So the tendency is, if I'm going to push like this, then the pushing is what like got me out of it. So I'm going to do it over and over again, because first of all, that's all I know how to do. Secondly, my body is experiencing that as a reward. Now, that is a very odd way of putting reward, because it's not a pleasant experience, but from a motor behavior standpoint, that is what is happening. So what we are doing in a cancellation by stopping the movement is creating an opportunity to revisit the moment in a different kind of a way. So the first step in a cancellation is go through the stammering moment, but stop right after. One of the things that Dr. Sachin said very eloquently sometime when we're talking about cancellation is that the stopping kills the momentum in a stammerer. That's what we want to actually do, because by stopping the momentum in a stammer, we are creating space for something else. Okay, so back to Vikas, जो उसने बताया कि we have to finish the word, stuttered word, and then we have to stop, and then we have to redo the word. But there are a couple of steps in between where we have to redo the word. So stopping is very essential to stop the movement, stop the momentum. Secondly, the second step in a cancellation is the T. So first is the S, second is the T. See, T is we take a break. Break we may take a pause, we may take a breath, but we take a break. Basically, T is for taking a break. Now, the T is very important as well, because in the break, we do two things. We think about कहाँ पे मैं हकलाया, किस word पे हकलाया, और कहाँ पे मेरी muscle tension थी. तो try to locate कि कहाँ पे हम अटके और कैसा फील हुआ माउथ में, थ्रोट में, किस लेवल, कहाँ पे टेंशन थी। और अगर हम क्वांटिफाई भी थोड़ा सा कर सकते हैं एक लाइकेट स्केल के ऊपर, 1 से 7 लाइकेट स्केल के ऊपर, या 1 से 5 नंबर के लाइकेट स्केल के ऊपर, तो सोच लो कि कहाँ पे टेंशन थी और क्या लेवल था उसका, ज्यादा थी, कम थी। Try to come up with some sort of a calibration as to what that number is. If it's a 4 or a 5 or a 6 or a 7, we'll go through this exercise in just a second. So T is to take a breath, and in the breath, we do two things. We observe, that's the O. We go back and think about where the tension was and what level it was,
And the last thing is P. We plan to do something different next time. So whether we revisit the word and redo the word, so R is one is to revisit the moment of stammering, and the second R is to redo it. So do it differently next time. Plan to do it differently next time. So basically, I've sort of encapsulated the entire steps into 4 steps. In a cancellation, you stop the movement, you take a break, you observe the tension, locus of it, location of it, and also the level of it, location and level. And P, which is the last point, is to proceed with a slightly easier motor movement. Now that ease can happen because we want to do the word differently. How? We could do it with a bounce, which is an easy, light voluntary stammer. We could do it with a prolongation, which is light voluntary stammer. Any technique that we know how to do, anything that will make it easier. It's not important what necessarily it is. Point is, we are bringing more ease into the pattern. So these are the 4 steps. Demonstration. Demonstration. That's a cancellation on demonstration. I voluntarily stammered on the word. I stopped. I thought in my head where the tension was, and I redid the word with a slightly easier stammer. Another example would be maybe the word is example. I know my tongue was pushing against the roof of my mouth, and I'm talking out loud as I'm doing this. I know my tongue was pushing, so I need to ease up on the pressure there a little bit. So I'm going to go example. I did it 3 times. अब कैंसलेशन में क्या होगा कि इट्स अ टेक्निक, ऑफ कोर्स इट्स अ स्पीच मोटर टेक्निक, जैसे विकास ने बोला, इट्स पोस्ट ब्लॉक करेक्शन, कि मतलब कि स्टैमरिंग को होने दो, उसके बाद चेंज कीजिए उसको. It does a number of things. Theoretically, it has a lot of purpose. One is, I'll go over the list with you in just a second. So, first of all, from a conditioning standpoint, from a learning standpoint, what is happening is we are rewiring the process. Because the typical tendency is to avoid or move forward very quickly and not revisit the moment. Last thing we want to do is to go back into what the stammer was. So the first thing it does is it forces us to approach where the tendency is to avoid, is to revisit where the tendency is to move forward. So it's doing the opposite of the body's tendency. So that's number 1. Okay. Secondly, the pause, the stopping, T for taking a breath, taking a pause, taking a breath, taking a break basically, is allowing us to resist time pressure. क्योंकि क्या हो रहा है कि every time, like one of the biggest things that like drives the tension and the stammer and the pushing and everything else is because you want to say things quickly. So this is another way to resist time pressure. Okay, so we're taking a break. Okay. Third, because we are observing, जो reflexively हमने किया, जो pushing जो हमने reflexively की, उस reflexive moment को, उस impulsive moment को हम reflect कर रहे हैं उसके ऊपर. So we are changing something reflexive into something reflective. And in the process of reflecting, we are reflecting on what is our role in the stammering moment. Yes, stammering is biological. Stammering is genetic.
Stammering is neurological. There's an involuntary component here. That's why it's very problematic to think that next time I'll say it fluently next time. There's still an involuntary component in a stammer. But there is a lot that we do, our bodies do, to push forward. So this is connecting us to what we are doing in the stammering experience by observing, by reflecting कि कहाँ पे टेंशन थी, किस लेवल पे टेंशन थी. हम अपने आप को फोर्स कर रहे हैं सोचने के लिए कि मैंने क्या किया, मैंने जो भी किया, मैं कुछ नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली भी कर सकता हूं, which is the last part, which is the P, which is planning to do something a little bit differently. So now we're changing the reward system. We're not just pushing forward, we're revisiting the moment. We are developing tolerance towards time pressure. And we're also bringing volitionally, voluntarily, हम थोड़ा सा ease ला रहे हैं अपनी stammering में, next round में. So that's the theory behind the cancellation. Why is it called a cancellation? Well, it's called a cancellation from a learning theory, from a conditioning standpoint. We're canceling the reinforcement that we got, the positive reinforcement, the reward that we got from pushing. We're canceling that because we're going back over it and we're bringing more ease into the stammering moment. So it comes, and this is actually also leveraging कि हमारी bodily टेंडेंसी क्या होती है. जब हम खुद हकलाते हैं और खुद सेल्फ करेक्ट करते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जो हम अटेम्प्ट करते हैं वो ऑफन टाइम ज्यादा फ्लुएंट होता है. सो जैसे मैं किसी भी शब्द पे हकलाया तो मैं 2 बार कैंसिल किया मैंने अभी इसको शब्द को. तो टिपिकली जब भी हम हकलाएंगे, अगर हम वापस जाएंगे अपने आप रिपीट करेंगे वर्ड जो है ये, that is going to induce maybe a little bit more fluent speech than if you were to correct based on somebody else. So it's leveraging our own tendency to be more fluent, to be more fluid next time, to be more ease because we've had that motor rehearsal. It is leveraging that. So there's a lot of theory that goes into a cancellation. So I want us to understand that a successful cancellation. What is a successful cancellation? A successful cancellation is just going through the process, because although it may not be fluent next time, the fact that we are doing it with more ease, the fact that we are resisting time pressure, the fact that next time if you evaded eye contact next time I'm going to make eye contact. All of those things are getting at above the iceberg, and they're also getting at below the iceberg. So cancellation is not just a technique to move forward a little bit more smoothly next time, but in going back and revisiting the moment, in going over, in reversing the conditioning component over here, in resisting time pressure, it's getting at below the iceberg in a desensitizing kind of a way. And it's also giving us an opportunity to bring more ease into the stammer. So it's a check box. It's a check mark above the iceberg, and it is a check mark below the iceberg. And cancellation is something we can do anytime. My recommendation would be कि अगर आप जैसे कि अगर आप if you're learning it for the first time over here, अगर आप और आपको experience है cancellation में, तो determine कीजिए कि मैं अगले हफ्ते या अगले दिन जब भी जिस भी फ्रीक्वेंसी में है, मैं एक बार कैंसलेशन जो है मैं ट्राई करूंगा रियल लाइफ सिचुएशन में. एंड इट कुड बी जस्ट विद द प्रैक्टिस विद समबडी वी नो वेरी वेल, राइट. जो भी हमारे कंफर्ट जोन में, अगर वहां पे अगर प्रैक्टिस करनी है वो दैट्स फाइन. इफ यू आर मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस्ड, यू वांट sort of do it with somebody that you feel less comfortable with, do it whatever it is. So try to do it in real life. That's where you're going to see the effect of it much more. But we'll practice it over here. तो कौन practice करना चाहता है मेरे साथ? Who wants to go first? Okay, Yatharth, let's go with you.
Let's try some voluntary stammering first. So you wanna tell me a little bit about your weekend? We both will throw some just some gentle, just some light voluntary stammers. No big deal. Every second or third word, we throw All in right. a voluntary stammer on it. Just an easy repetition, just like that. Let's try it for about 30 seconds. All right, perfect. So, this weekend, my friends came from Gurgaon, and they came on Saturday, and we partied, we chilled out, and we played FIFA, PlayStation, and yeah, we ate outside, and yeah, that was mostly my weekend summed up. Nice. That summed up at the end. Was that a real one or was that a fake one? It was converting into a real one, but if you could see, there was a pause. After that, I did the voluntary again. Okay, good. Yeah, you had it all in there. Okay, good. Tell me more. What is FIFA? Okay, so FIFA is a video game basically, and it is a game of football. Hmm. So for football, and it is now very popular. It is played by youngsters, and it helps in the eye coordination, and uh, it is developed by EA Sports, and I think yeah. Okay, good, Mm. good. Very good eye contact. All that is very like strong. You're making really good eye contact. You're looking very natural. All of those things are wonderful. You're still in the voluntary stammer mode, right? Yeah, Okay, yeah. okay. Let's But try when some more. the flow comes, I forgot Yeah. in the between. वो तो होता ही है. Well, that's just natural. एक बार और ट्राई करते हैं. एक बार और 30 सेकंड में ट्राई करते हैं. Mhm. Uh, and I want you to do the following things. Whenever you do a voluntary hammer, raise one finger. Finger of like your left hand, or you can raise one finger. And if it's a real stammer, then raise two. Okay, Okay. got it. So let's get a little bit aware कि this is a fake one. I mean, yes, ये नकली है. So let's try to sort that out a little bit. और 30 second बात करते हैं. I'm going to put you on a clock. Tell me Okay, more. Tell me what you ate with your friends. You ate outside a lot. So क्या खाया? yeah. So when they came from Gurgaon, Number one, uh, number two. Number one, number and this two. is number two. This is number Okay. two. ठीक है. So We're going to do a cancellation on that word. Just remember that. okay, I'm going to when that word. No, not right now. Keep okay, going. I'm going okay, to note the ones which are your real stammers. One was Urgao. We're going to do a cancellation right after this, after you get done. Keep going. Sorry to interrupt. Keep going. all right. So they came from Gurgaon, One or and two. yeah, One or two. two. This is also two. Gurgaon is a Okay. word that I usually stammer. Okay. So they came at night because on Friday, One or two. One or two. one. Okay. Mhm. On Friday, they came at night because one of my friend had office till night, Mhm. and they came at 12 o'clock at night. So we ate at a dhaba, and there we had egg omelette, egg egg omelette, and a lot of cup of chai. Mhm. Okay. And after that, we because it is
Ramzan or Rose, I don't know what it's called, the 30-day fast. So a lot of shops were open at night too, and so then we went there for some some proper meal, and after that we went for some jalebi, jalebi, and Okay. after that we came home at 3:30 at night. Okay. Okay. Let's stop here for a second. That's Okay. wild, yeah. That sounds great. 12 to 3. That's I that's great. know. I really wish I was as young as you. I need to sleep at about 9:30 or 10. Uske baad I can't hold out longer than that. Yeah. Okay. I Awesome. think we all would क्या like what to we have a saying आगे? weekend like this. I think we all would like to have a weekend like this. I know. It sounds great. Okay. ठीक है. So the words that I could catch, you let me know if this is this is the right list. One is the word Urgaon. You said you stammer regularly on that word. Hmm. Friday was another word. Then there were two others I don't remember. What were the other two? You remember them? One was chai, I think, Chai. that I Okay. remember, Okay. and one was jalebi. I don't know if Okay. it was voluntary or involuntary. ठीक है, कोई बात नहीं. So chai and Gurgaon. jalebi and Urgaon and Friday. ठीक है. So let's stammer on the word Gurgaon again, and I'll lead you through the steps. Just go through the words, use that word in a sentence. You'll probably stammer naturally, or if you don't, just volunteer stammer on it. Moment you get done with the stammer, I'm going to raise my hand. That's the stop. That's the hand for the stop. And then what If you're you going to can do just is ask me, where my office is, then I will reply to you with Gurgaon. perfect, perfect. Yeah. I'll do that. उसके बाद जब मैं हाथ दिखाऊंगा उसके बाद रुकेंगे उसके बाद then the steps will start then we'll take a break. Basically there'll be a 2-3 second of silence in which I will ask you कहाँ पे जब तुम हकलाए वर्ड पे तो कहाँ पे अटके किस जगह पे टेंशन फील हुई और लाइकेट स्केल से 1 से 7 का लाइकेट स्केल. एक सेकंड में रुको मैं लेके आता हूँ. तो इस स्केल के ऊपर जो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 से 7 तक 1 से 7 तक where 7 is very tight, 1 is very light, where would you locate the tension level? So just become a little bit aware. This is turning from reflexive into reflective. And then I want you to think a little bit about and then talk me through it. कि कहाँ मैं अटका, किस जगह पे जीभ में थी, किस level पे थी, क्या किया मैंने. और उसके बाद जो है, I'll ask you to say the word again, which is the P part, which is okay. Do it again, just lower the tension a little bit. Focus on where the tension was and just lower it a little bit and move forward. So where do you work? मेरा ऑफिस गांव में है. So there was a lot of tension there. Talk to me about where you felt the tension and what level it was. So most of the tension was on the backside of my tongue, not under the tongue, just up my tongue, but here, like in the backside of the tongue, and the end part of the tongue. And if I talk about the scale, it was probably 6 or 7 in the later stammer, but in the starting it was like 2-3, but when I forced it, it became 6-7 easily. Right, And right, sure. yeah. Yeah. So it ramped up a lot. It ramped up a lot at the beginning, it till the end. You were also increasing your
speed. There's a very strong tendency in a moment of stammering to increase the speed. So we've analyzed like the hell out of it. So now I want you to do the word again, but get stuck at the same levels, get stuck with the same level of frequency, but do it more voluntarily now. Make it tight at about a 6 or a 7. And while you're doing the at a 6 or a 7, I'm going to move the scale down to about a 3 to a 2. And as my finger is going down that scale, I want you to release it. Okay. So it will sound like this. Gurgaon. Got it. Got it. All right. Try it. You can ask me again. Yeah. Well, I want you to not stammer again. I mean, I don't want you to say the word naturally Okay, okay. again. I want you to hit that Okay. tension with the G. I'm going to count to 3. Just start with that word again. Hit it at the Okay. same level as you found it. Find it again. That's also Okay. Okay. important. Okay. Okay, Okay. go. 1, 2, 3, go. Hit that. That's a 6. That's a solid 6. Good. Now feel it go down to a 5. Good. So you're still holding it. You're still letting the sound go. Come on. Good. Down to good. Down to a 4. And go to a 3 and then release it as I release my finger. Gurgaon. Very good. Very good. So what you've also done in the process, Yatharth, is learn to pull out. Because in a pull out, just like Gurgaon, now we're doing an in-stutter correction. We're not waiting for the stutter to finish. We're catching it in the middle of a stutter. But the way you get to a pull out is through a cancellation, because the cancellation is much bigger. It addresses many more things. Okay, excellent. Big round of applause to Yatharth. Nicely done. Okay, let's go to the next victim. Who's the next victim? Who wants to go next? I need What another about volunteer. Vinayak? What about Vinayak? Vinayak, Let's go I with think the, he make a if perfect you're okay doing it PDP. with Anak. Sure. I mean, if he agrees. ठीक Yeah, है. sure. तो Anak पे चलते हैं, उसके बाद राहुल के ऊपर जाएंगे. How about we do it, Rahul next? Okay, same scale. So talk to me a little bit, and I'll let you do the same thing. Number 1 is for the Nakli one. Number 2 is for the Asli one. Okay. So, like, should I talk about anything specific? Nothing. Anything you want, boss. So I was thinking about this cancellation. So I was thinking about the person who would have probably discovered it. He would have, yeah. So like he would have probably thought about his stammering so much that he started to become aware. Number 1 or number 2? That one. Number 1. That was a fake one. No. True one. Number 2. I thought so too. Okay. So that was 2. Aware was the word. We're going to do that one again. Okay, keep going. Yeah. So like he would have tried so much to be aware of that. This brings a question to my mind that when the technique is born out of overthinking of stammering, when the technique is born out of that, will it lead us to to be free of that mindset? So that was a natural question that popped up in my head. Yeah. So yeah. So the question was again, ask me the question again one more time. So like the person who would have probably figured this out
he became so concerned with his speech that he kind of started to overthink about his speech process. So, do you think a technique that comes uh, 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 out of that overthinking will lead to will lead to we being free of the stammering mindset? It's a very good question. What do you guys think? आप लोगों का क्या ख्याल है? जो technique जो है to use the Anax term, which is overthinking. I don't know if it's overthinking. It's certainly thinking, but can it allow us to be free of the mindset? It's a very good question. क्या लगता है आप लोगों को? But I think that once you yourself mentioned that our goal of using a technique should be to modify our stammer rather than to hide it. So, and also I think for us to be able to use any technique, that means that we need to bring a certain amount of awareness, because without that background of awareness, we will not be able to use any technique. So this is exactly my point as well. I think what you're calling overthinking, certainly you can call it anything you want. You can say it's overthinking, but I think to Arjun's point, I agree with him as well. It's bringing a mindfulness component. And anytime we're bringing a mindfulness component, whether it's to the motor process or to avoidance behavior, you can also say that when we are cataloging all the avoidance behaviors we have, we're overthinking our avoidance behavior. You can use a same term, but it's a productive exercise. Because if you're overthinking, if we are thinking about our avoidance behavior, कि किस चीज में avoid करते हैं, कैसे avoid करते हैं, कैसे feel करते हैं, that is the way to reflect, to do something differently next time. So I think mindfulness is for me, the more like, to me, you can call it anything you want, but to me, it's the mindfulness. The way you get on the other side of the stammering experience is through the mindfulness component. There's no other way to do it. You have to think about what we do and to do things differently, whether it's avoidance behavior or more attention, or in some combination, it's more emphasis on one versus the other. So the mindset is the other used. And I think the mindset is very much part of turning something that is more reflexive into something that is more reflective, something that is more like pushed, replacing with something that is more pondered and more pensive, right? So you're thinking about what you're doing reflexively. You can call it overthinking, but I think it's, in this particular context, it's more mindfulness. So let's go with you. There were two words. One was aware. One was out. So let's use the word aware in some other sentence. So just say something else and use that word. And whenever you get stuck on that word, whether it's a real one or a fake one, raise number one, raise one finger or two fingers, and I'll walk you through the same process as I walked your thought. So today morning when I was walking in the park, I suddenly became aware. Stop. We've broken the momentum. Now we're going to go back and think about where, like, what did you do? Where did you feel the tension? What happened? So, like the tension was there in my breath, like my whole breath stopped. So it was probably there here somewhere. Then it was there on my lips. So two places. One was in the throat because it's a voiced sound that you couldn't get the voicing going, and then you also were pushing with your mouth. Okay. So what would you say its level was?
Uh, four. Four. Roughly 4. Yeah. Okay. Try to locate it again. Try to do the same thing again in a more thoughtful way. To say same stammer again. Land at a 4 if you can. Aware. Okay, good. Now, was that 4 or did it ramp up a little bit Yeah, it did ramp up to 5. to like a 5? Okay, so do that again at between a 4 and a 5 again. Just kind of a similar feel. And feel again where you're getting stuck. Feel that again. Uh, Aware. Okay, good. So there were 2 other things you did, right? So you said you looked away and you moved your head. So I want you to do the same level again, but look directly at the camera and keep your head stationary. Now I'm trying to reduce your avoidant behaviors. Okay. So keep that eye contact with the camera, look directly at the camera, do the word again, but don't move your head. Stay at the same level. Aware. Okay, good, 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 good. That's an improvement because you didn't evade eye contact and you didn't move your head. Okay, good. Do the same thing again and see if you can land a little bit lower, just a little bit lower, between a 3 and a 4. Aware. Good, 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 good. Can you feel the difference between a 3 and a 4 and a 4 and a 5? Yes. A little bit? Okay. The- Hit that one again at a 4 and a 5. Aware. Good, good. That was also louder, so more force. Okay. So reduce loudness next time. Hit it at a 4 and a 5. No loudness. Change it. Aware. Good. Now do that again between a 3 and a 4. Aware. Good. Now go a little bit softer between a 2 and a 3. Aware. Good. Now you've done many attempts turning something that is reflexive into something highly reflective, right? We can move on. Okay, use that word again, voluntarily stammer on that word, aware, at about a potential level 2 or a 3. Don't go all the way to a 1. Keep it at about a 2 or a 3. Let there be some presence in that word, but less tension. Okay. Aware. Okay, good. Use that word in a sentence, just like you were using it in a sentence right at the beginning. Okay. So, being aware should be a byproduct of increased energy. Okay, wonderful. Good, good, good. So you've done lots of little rounds of this kind of stuff. Basically, it's a cancellation, right? You basically done a cancellation. Let's try a pull out now with you, okay? And this time I want you to, when you get stuck on the word aware, keep the sound going. Keep the sound going. So it will sound like this. I'll be at a level 2 or a 3. There won't be a lot of tension in my speech, but there will be a break and I'll keep the sound going. So I'm going to be aware, right? I kept the sound going. It's important to keep the sound going because it's only when the sound is going, then you can actually move into an easier, smoother glide on that particular word. So let's try that again. I want you to just hold it as long as you possibly can. Don't release it. And the moment I clench my fist, that's when you're going to start getting to that particular pattern. And when you see my fist open up is when you're going to go. So it'll sound like this. I'm going to be
Where? Okay. Okay, so keep the sound going and then watch my fist and release it when I release my fist. Use it. Sh- should I use it in a sentence or only that one? Sure, use it in a sentence. Um, I am only partially. Good, 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 good. Keep going, keep going, keep going, keep going. Keep going. Watch my fist. Watch my fist. It's tight still. So you, as long as my fist is closed, you're keeping the sound going. Keep going. Release it. Release it. There was no sound, was there? Yeah, it was there. Okay. I need it to be audible. Okay. 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 So you may feel the sound, you're right, but it's not an audible sound. So keep the sound going. I should be able to hear it. Everybody should be able to hear it. I am partially. Good, good. Keep the sound going. Keep the sound going. Keeping the sound going. Now watch my fist. Watch my fist. It's going to open, and as it opens, slide out. That's good. Okay, that's a protracted pull out, but it's a pull out. You can shorten it with more practice, all this stuff, but that's basically the experience of what a pull out sounds like. So if you were to do a pull out on a word aware, it might sound something less. I'd like to be aware, right? That's what we're basically going for at some point. Okay, good. Big round of applause to Vinayak. Great. Nicely done. Thank you. Acha, Rahul, you want to try? जी सर बिल्कुल ठीक है तो कोई भी टॉपिक चूज कीजिए सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम एक मतलब कि नकली है दो मतलब असली है ठीक सर तो मैं सर कुछ टाइम से अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं अ, अ, जल्दी जल्दी बोलने के साथ साथ मैं जब अ, खाना भी जब मैं खाता हूँ तो मैं जल्दी खा खाता हूँ मैं तो अ, इसका जो फर्क जो है वो मेरे मेरे जो जो आदतें जो है उसके अंदर भी ये बहुत शा, शामिल है तो अब अ, तो अभी मैंने कुछ टाइम से अपने आप को काफी डीपली ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कि मैं जब मैं अ, चीजें जल्दी करने की कोशिश करता हूँ तो ये सर कुछ ऑब्जर्वेशन थे सर मेरे ठीक है तो आपको लग रहा है कि आपका जो स्पीच बिहेवियर है वो रियल लाइफ में अदर सिचुएशन में भी कैरी ओवर कर रहा है तो आपने जो जब मैंने काउंट किया आपने 4 वर्ड्स के ऊपर असली हकलार थे आपकी एक तो फर्स्ट वर्ड था खाना दूसरा वर्ड था अभी तीसरा वर्ड था चीजें और चौथा वर्ड था डेली तो लेट्स ट्राई cancellation in 3 out of 4 same sequence but a little bit faster because you've seen how other people are going to sort of have just on it so खाना पे ट्राई करते हैं खाना जो है वर्ड है किसी और सेंटेंस में यूज कीजिए तो मैं आपको स्टेप्स में आई विल वॉक यू थ्रू द स्टेप्स तो अभी जैसे कि मुझे खाने का मुझे काफी
रुकिए शॉक। रुकिए 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 रुकिए, वापस जाते हैं, खाने पे वापस जाते हैं। तो एक बार और यूज कीजिए और थोड़ा सा फोकस कीजिए कि जब आप हकला रहे हैं खाने में, और अगर वॉलंटरी है या नहीं वॉलंटरी, तो कहाँ पे अटका हुआ है। तो जैसा कि सर मुझे खा खाने काफी हाँ, काफी तो बताइए शौक है। तो कहाँ पे। हाँ सर एक तो ये कहीं पर एक तो माइंड मर पे जो है ये कहीं क्लिक होता है। फिर उसके बाद जीप के पीछे वाला जो पार्ट जो है हाँ, ये उसके ऊपर कहीं पर टेंशन क्रिएट करता है सर। ओके गुड। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी जीभ जो है उसके पीछे के हिस्से के ऊपर, ऊपर जो रूफ ऑफ द माउथ है उसके ऊपर हिट कर रहा है। जैसे कि यथार्थ ने भी बोला था कि यही बोला था कि गुड़गांव में ग जो साउंड साउंड है वो भी सेम लोकेशन है उसकी, ख ग ये सेम लोकेशन है। एक 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 साउंड में वॉइस है, एक साउंड में नहीं वॉइस है, लेकिन लोकेशन सेम सेम है। ठीक है, एक बार और उसी टाइप पे हिट कीजिए, सेम वर्ड इस्तेमाल कीजिए और उसी जगह पे हिट कीजिए, सेम लेवल के ऊपर लगाइए और मुझको आइडेंटिफाई करके बताइए कि किस नंबर पे आपके लेवल, किस किस लेवल की टेंशन थी आपकी। तो सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे खाने का काफी मुझे शौक है। तो गुड। तो ये जो है खाने पे उस टाइप पे कहाँ पे, किस लेवल पे थी आपकी। 5 और 6 सर। 5 और 6, तो ओके, लेट्स यूज दैट वर्ड अगेन। फिर खाने पे ट्राई करते हैं। बस शब्द है खाना, बस उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए और वो टेंशन को फिर से लोकेट कीजिए। तो जैसे मुझे गुड गुड गुड, खाने का होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए, निकालिए मत, होल्ड कीजिए बस। जहां पे टेंशन है आपको होल्ड कीजिए बस। स्टार्ट कीजिए। तो मुझे गुड 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 गुड। नंबर 6, हाँ अगर नंबर 6 है जस्ट नॉड योर हेड। सर। ओके गुड गुड गुड। नंबर 6 है, अब इसको 5 पे लेके जाइए, सेम लेवल लेकिन अ लिटिल बिट लेस फील कीजिए। मुझे खा 5 5 5 5, कीप इट एट 5, आई एम सॉरी 5। हाँ 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 गुड हाँ हाँ, जी, गुड 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 गुड। हाँ। कि आपको थोड़ा सा फर्क सेंस हो रहा है कि 6 और 5 में क्या अंतर है। राइट सर। ओके, है सर फिर से पहले ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, ख पे जाइए और 6 पे होल्ड कीजिए। ख- गुड खाना। गुड, रिलीज कीजिए, गुड। अब 5 के ऊपर कीजिए। 5। खा- हाँ खाना। अच्छा, ये 5 था या 4 था, क्या 4 था था। सर। 4 था ये सर। चार चार था, तो आप बेसिकली 4 और 6 के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, राइट सर। तो लेट्स स्टे बिटवीन 5 एंड 6, लाइक 4 और 4 एंड 6। 6 पे फिर जाइए। ऐसे मुझे खाने का काफी शौक है। गुड, आप ब्लॉक में गए और 6 के ऊपर रहे। अब आप सेम ब्लॉक के अंदर जाइए और 5 के ऊपर जाइए। तो मुझे खा, खा, खाना। गुड 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 गुड, अब 4 के ऊपर जाइए। खाना। गुड, तो अब आप 6 से 4 तक जाइए। तो हिट कीजिए 6 को, होल्ड कीजिए, जैसे कि मैंने विनायक को बोला था कि कीप द वॉइस गोइंग, वैसे वैसे कि आप भी ख ख ख ख ख ख ख ख कीप द वॉइस गोइंग। और जब मैं फिंगर्स अपनी स्लाइड करूंगा 6 से 5 तक, 4 तक, विल गो 6 to 4, 4 to 6, 6 to 4,
4 to 6 उसे खेलेंगे उसके साथ थोड़ा सा, अपनी जो टेंशन है, मैकेनिकल टेंशन, उसके साथ खेलेंगे हम। तो स्टार्ट। तो मुझे गुड, ये 6 है, ये 6 है। अब इसको फील कीजिए, 5 पे जा रहा है। होल्ड कीजिए, फील कीजिए, 5 पे जा रहा है। अब ये 4 पे जा रहा है। कम फोर्स यूज कर रहे हैं लेकिन अभी भी ब्लॉक में है हम, ठीक है, कोई बात नहीं। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, अब ज्यादा जाइए, 5 के ऊपर जाइए। का उसके बाद 6 के ऊपर का जाइए, 6 के ऊपर जाइए। का गुड गुड गुड, इसको 6, अब 5 के ऊपर। का का और उसके बाद 4 के ऊपर। का 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 और जब मैं फिंगर अपनी स्लाइड करूंगा 2 तक, तो वो शब्द निकालिए। ना गुड 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 गुड। सो दैट इज बेसिकली ऑल्सो अ पुल आउट। तो रियल लाइफ में उसका होगा खाना, खाना खा खाना, खाना, डेली, अभी, अभी, खाना, डेली। ओके, लेकिन ये सब जो है मैं आपको ट्रांजिशनल बता रहा हूं कि आपको पोस्ट टेरर से इंस्ट टेरर भी जा सकते हैं, लेकिन ये रूट है। ठीक है। हमें शुरू करना है पोस्ट टेरर से, क्योंकि पोस्ट टेरर में हमको ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है, हमको अवेयरनेस की जरूरत है। फुल आउट में हमको अवेयरनेस की जरूरत है और कंट्रोल की जरूरत है। इट्स मच मोर चैलेंजिंग। इसलिए हम पोस्ट टेरर से शुरू करते हैं। उस पोस्ट टेरर में काम करते करते हम डिसेंसिटाइज भी हो रहे हैं, और उसी डिसेंसिटाइजेशन से हम जो है, वो जो पुल आउट है उसको नेक्स्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो है, ये वॉलंटरी स्टैमरिंग से ही चलेगा, क्योंकि वॉलंटरी स्टैमरिंग में हमें सबसे ज्यादा मैनेजमेंट महसूस होती है, सबसे ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। यथार्थ। Sir, I wanted to ask you that in pull out, do we have to do the whole procedure in one breath, uh, or a breath can be taken in between You pull can out? take a breath in between. There's not one way. The only thing is, the only requirement is that let's get the sound moving. 8 seconds, 8 seconds, guys. Let me close the door. The only stipulation, the only guideline is to keep the voice going, because it's much easier to do a pull out if I've got the voice going. Once the voice stops, then I have to initiate voicing again in the middle, which is a little bit difficult to do. So I'm doing these rollouts as I'm talking to you. They are very gentle rollouts. There's a prolongation component in there, but I'm catching myself in the middle of a voluntary stammer, and I'm trying to put some ease in there. So the only requirement is just keep the voice going, so you can keep the glide going. That's all. Okay, good. संजय, आप ट्राई करना चाहते हैं नेक्स्ट? सर मुझे ना जिन वर्ड्स में ज्यादा होती है मैं उनको बोलूं, मतलब उन पे ही मैं बोलूं। नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि हम शुरू करते हैं उन साउंड से, उन शब्द से जो हमारे पास थोड़ा सा आसान है, because it's much easier to have motor control over things that body feels less anxiety about. That's the only reason for it. But if you want to practice on sounds, practice on words which are harder, then go ahead. That's fine too. Yahan pe is just practice. सर कभी कभी देखा गया है कि हमको ए ए ए ए ए इंटरप्रिटेशन करने में डिफिकल्टी फील होती है।
हम्म और जैसे कि जैसे कि मैं अभी एक NISM का एक एग्जाम है, ई ई हम्म ई ई इक्विटी डेरिवेटिव्स का, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो तो उसमें मैं शायद ब्लैंक हो गया शायद। ब्लैंक हो गया क्योंकि याद 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 नहीं आया शब्द, या फिर कह नहीं सके? नहीं सर, मुझे याद नहीं है। मेरे को, मैं क्या वो वर्ड ढूंढ रहा था जिसमें मुझे प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मैं ओके मतलब नॉर्मल स्टेट में नहीं था। मैं फिगर आउट कर रहा था कि किस में मुझे इस स्टैमरिंग होती है। ओके गुड। तो ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं मेरे साथ, ये नकली है या असली है? नहीं सर, ये वो वॉलंटरी स्टैमरिंग, लेकिन ये अभी जो स्टैमरिंग हुई ना, वो इनवॉलंटरी हो गई है। मतलब वो जो भी मैं होगी। इस हाँ हाँ, डेफिनेटली। स्टैमरिंग बोल रहा था ना, उसमें वो वॉलंटरी स्टैमरिंग ओके ठीक है, नो हुई। प्रॉब्लम। तो अभी एक काम करते हैं, मैं आपको टाइमर के ऊपर रखूंगा। आप कुछ मुझे टेक्निकल बताइए, अपना जो भी इंटरप्रिटेशन के बारे में बता रहे हैं, अपने काम के बारे में बता रहे हैं, 60 सेकंड तक बताइए। हर 2-3 शब्दों के बाद थोड़ा सा वॉलंटरी स्टैमरिंग डालिए इसमें, लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग, जस्ट लाइक यू आर डूइंग राइट राइट नाउ। कीप डूइंग इट, आई वांट यू टू नो अ लिटिल बिट अबाउट योर वर्क। सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा है। तो मैं इस समय ई ई ई इक्विटी डेरिवेटिव को इस स्टडी कर रहा हूँ। इक्विटी डेरिवेटिव में हम एक आ, 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 ये सर आ, 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 अंडरलाइन से बनता है। और इसमें ये ये इसमें ली 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 लिवरेज लिया जाता है। और लिवरेज हरदम द द द द द द द डबल सॉर्टेड हो, 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 होता है। होता में भी सर स्टेमरिंग की। ठीक है ठीक है, एक्सलेंट एक्सलेंट। सो 3 शब्द थे, 2 अंग्रेजी के, एक हिंदी का। 2 अंग्रेजी के शब्द थे तो अंडरलाइंग और डबल और होता, हिंदी का शब्द। तो अबल पे ट्राई करते हैं। सो यूज द वर्ड अबल एक और सेंटेंस में यूज कीजिए, और इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। ई ई ई ई ई ई सर, इसमें भी स्टेमिंग थी। ई ई ई ई इक्विटी इक्विटी मार्केट में जब हम भी कोई ट्रेड करते हैं, तो वो द द द डबल सॉर्टेड ही होती है, क्योंकि उसमें Okay, एक let's stop. We need to stop that word. So you started on the word able, थोड़ा सा फेक था, थोड़ा सा असली हो गया, somewhere in between, ठीक है। तो एक बार और हिट करते हैं, मुझे बताइए कि अगर आप उसमें ज्यादा टेंशन अगर आप डालेंगे तो कैसा महसूस होगा आपको? लेट्स यूज द वर्ड। That's about a 6 or a 7. द द द द द द द द सर, मैं मतलब जो स्टमच जो होता है या चेस्ट होता है ना, उसमें स्टिफनेस सी फील होती है। ओके ओके। तो एक आपको यहाँ पे टेंशन फील हो रही है, हाँ। और किस जगह पे महसूस हो रही है आपको? और सर, जो टंग होती है वो लगता है कहीं स्टक हो गई है,
ये हम्म और जो एयर होती है ना वो फ्लो डिस्टर्प्टेड है, मतलब स्मूथली नहीं आ जा रही। ठीक है, गुड। तीन चीजें बताएंगे आपने। एक तो एयर फ्लो डिसरप्ट हुआ, एक चेस्ट में थोड़ी सी टेंशन थी और एक जीभ में थी, राइट? यस सर। ओके, तो यही टेंशन फिर से लोकेट कीजिए वॉलंटरी स्टैमर में। यही टेंशन फिर से लोकेट कीजिए सेम लेवल के ऊपर, और उसके बाद ये भी बताइए कि मुझे किस लेवल पे थी आपकी। ट्राई कीजिए। द द द द सब फाइव फाइव लेवल पे। ओके, क्वाइट हैवी। तो 6 पे ट्राई कीजिए। द द द द ओके, ओके, द गुड द गुड गुड गुड। 5 पे जाइए फिर। द द द द द ओके, गुड द गुड गुड गुड। 4 मैंने पे देखा जाइए। कि मेरे स्टमच में ज्यादा स्टिफनेस है चेस्ट के मुकाबले। गुड, आपने ये भी लोकेट किया कि टेंशन 3 जगह पे फिर से है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। गुड। और रिफ्लेक्शन। अब आप 4 पे जाइए। चेस्ट पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा लाइट कीजिए अपने। द द द ओके, गुड। द 5 5 5 5 5। द द द द गुड। 6 6 द 6 6। हिट दैट रियली हार्ड। द 6 6। द गुड गुड। 5 5 5 5 5 द 5 4 द 4 द 4 3 3 द 3 द 3 3 द 3। और अब आंसरिंग से निकलिए उसमें। द द द द द द निकले। वन। गुड गुड गुड। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन महसूस हुई फिजिकली कि 4 में क्या क्या लेवल था, 5 में क्या लेवल था, 6 में क्या लेवल था। ओके, ये हम थोड़ा सा कैलिब्रेट करना सीख रहे हैं। अपनी टेंशन को, उसको थोड़ा सा कैलिब्रेट करना सीख रहे हैं कि किस लेवल पे है और कहाँ पे है। ओके, लेट्स वर्क विद वन मोर वर्ड। दूसरा वर्ड था अंडरलाइंग। लेट्स यूज दैट इन अ सेंटेंस। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हरदम एक अ अ अ अ अंडरलाइन होता है, उसी से Okay, उसकी good. Okay, stop, 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 stop. I don't want to hear anything else. I want to go back to that word. Okay. तो उस शब्द में मुझे डिस्क्राइब कीजिए अपनी बॉडी में क्या फील हो रहा था आपको। सर एक बार और करना चाहूंगा, मतलब मैं शायद कुछ मिस श्योर कर गया। श्योर श्योर। सर यहाँ जो शायद वॉइस बॉक्स होता है वहाँ कुछ स्टक हो गया ऐसा लगा गुड। यहाँ पे यहाँ पे। लैरिंग्स। ओके, गुड। तो आपके वोकल फोल्ड जो है, वोकल कॉर्ड जो है, हाइपर एडक्ट हो रहे हैं बेसिकली आपको। It's called a hard glottal attack. So you're really jamming your vocal folds. ठीक तो ठीक है, गुड। तो इसमें थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, और थोड़ी सी ट्राई टेक्निक इसमें ट्राई करते हैं। I want to give you a little bit of an intro. इसको इजी आंसर बुलाते हैं। इजी आंसर में क्या होगा कि आप जो भी शब्द यूज जिस भी शब्द में यूज करने जा रहे हैं, उसके स्टेप्स होंगे। स्टेप्स में ऐसे होगा कि सेम वर्ड है कि मतलब कि अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में आप ब्रेथ लेंगे, उसके बाद जो है ऊपर जब ब्रेथ आपकी जब खत्म होगी, जब जब आपकी लंग्स फुल हैं, तो आप थोड़ी सी हवा निकालेंगे। और हवा निकालने के बाद जो है थोड़ा अपनी वॉइसिंग स्टार्ट करेंगे, जेंटल फोनेशन, आराम से उसको थोड़ा सा निकालेंगे, और उसके बाद वाउल स्ट्रेच में जाएंगे। इसका मतलब इट विल लुक लाइक दिस। अंडरलाइंग, अंडरलाइंग, सर ये तो थोड़ा सा अंडरलाइंग। प्रोलोंगेशन जैसा ही हो गया ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोलॉन्गेशन कंपोनेंट है इसमें। और थोड़ा सा
एयर फ्लो कंपोनेंट भी है इसके अंदर, कि प्रोलॉन्गेशन जो शुरू होगा उसका असम्पशन यह है कि आपकी वॉइस स्टार्ट हो गई है, लेकिन वॉइस कैसे स्टार्ट करें? जब हम ब्लॉक में जा रहे हैं तो वॉइस कैसे स्टार्ट करें? तो बिफोर वी गेट इनटू अ ब्लॉक, नॉट गेटिंग इनटू अ प्री ब्लॉक करेक्शन हियर, तो क्या होगा उसमें कि जिस 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 शब्द के ऊपर आप स्टैमरिंग करने वाले हैं, हमको जानकारी है, इंटरनली शारीरिक जानकारी है कि हम किस शब्द के ऊपर हकलाने वाले हैं, तो उस जानकारी को हम लेवरेज कर सकते हैं कि अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड है अगर कभी हमारे पास, तो हम ये सारे स्टेप्स जो है शुरू करेंगे बिफोर वी गेट इनटू दैट वर्ड। सो मतलब कि अंडरलाइन, अंडरलाइन, थोड़ा सा हवा निकालिए, उसके बाद जो है वॉइसिंग शुरू कर दिए, उसके बाद फुल फोनेशन। तो स्टेप्स ट्रैक करते हैं, ए बी सी डी पे इजी आंसर ट्रैक करते हैं। दिस इज ए, ए, गुड, ई, ई, वेरी गुड, आई, आई, ए, ऊ, ऊ, ओके, गुड। लेट्स ट्राई इट विद अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन। अंडरलाइन, ठीक है। तो अगर आप, सो नेक्स्ट क्या होगा कि सेम वर्ड पे ट्राई करेंगे हम, वर्ड स्टिल अंडरलाइंग, और उसमें क्या होगा कि अब हम जब पी स्टेज के ऊपर जाएंगे तो आप प्रोलॉन्गेशन कीजिए उसके ऊपर। ओके, स्टार्ट द वर्ड अंडरलाइन। गुड, 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 गुड। जब मैं रिलीज करूंगा अपनी मुट्ठी, तो आप उसको ग्लाइड कीजिए प्रोलॉन्गेशन में। अंडरलाइन। Very good, very good, very good. You just taught yourself a pull out. Okay. Cancellation say we moved into a pull out. Nicely done. Big round of applause to Sanjay. Big round of applause to Rahul. Okay, excellent. Two more people to go. Three more people to go. We have about 15 minutes left. Let's go to Ajat. Hello, sir. Hello, hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good evening. हाँ, जब आप रेडी हो थोड़ा बताइए अपने बारे में, काफी टाइम से बात नहीं की आपसे। या तो सर मैं क, काफी अच्छा हूँ एंड अभी मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ तो उनमें से एक लाइन जो काफी अच्छी लगी वो ये है कि जो शिवाजी की जो माता जी थी उन्होंने उनमें राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो कूट कूट के भर दी थी उनमें। ओके, तो वेरी गुड। क्या पुल आउट कर रहे हैं आप, क्या पुल आउट कर रहे हैं। अ, वेरी नाइस, कीप सर गोइंग। मैं सोच रहा था कि ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब जो भी लाइन बोल रहा हूँ उन्हीं में पुल आउट कर लूं ओके, और वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कैंसिलेशन की जरूरत ही नहीं है। एक बार और ट्राई करते हैं। कीप गोइंग, आई वांट टू हियर इट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पुल आउट्स, कीप गोइंग इट। यहाँ तो जब शिवाजी अपनी अपनी दशा में कार्यरत थे तो वो अपनी अ, आर्थिक कठिनाइयों के लिए कुछ सूझबूझ से निर्णय ले रहे थे। तो उ- उ-
नौसेना का गठन किया। ओके ओके, एक मिनट रुक रुक किए। तो ये नेचुरल स्टैमर्स हैं या आपकी, क्या आप या वॉलंटरी स्टैमर के साथ कर रहे हैं? सर मैंने ये जो भी सभी जगह पुल आउट लेने की कोशिश की है, जैसे अभी आपने बोला ना कि 4 पे 6 पे 6 पे 4 पे, तो मैंने इससे पहले मैं जानता था कि हाई हाई टेंशन से लो टेंशन की ओर जाना है। बट अभी जब आप सभी के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तो मेरी ऑडियो ऑफ थी, बट मैं साथ ही मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था कि लोअर से हायर कैसे जाना है। तो वो तो आपके साथ रिवर्स में जाते हैं। आप कम टेंशन में कीजिए, कम टेंशन डालिए, और उसके बाद ज्यादा टेंशन जाइए। लेट्स डू अ रिवर्स पुल आउट विद यू। वो भी फील करना शुरू करते हैं। सो लेस या टेंशन, 4 से 6 तक। या हाँ, तो ये मेरे लिए टफ था, बट मैं कोशिश करूंगा कि ओके गुड, ये ज्यादा जाइए, पुश इट, कम कीजिए, कम कीजिए, प्रेशर कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए। गुड, कीप गोइंग। अभी निकालिए मत, निकालिए मत, शब्द मत, शब्द मत निकालिए। फील कीजिए, कम टेंशन से ज्यादा टेंशन के ऊपर जा रहे हैं आप। ट्राई इट। गुड, आई कैन सी इट इन योर फेस। उसके बाद कम में के ऊपर जाइए, 4 तक जाइए, 3 तक जाइए, निकालिए मत अभी। उसके बाद 6 तक जाइए, 6 तक जाइए। गुड, अब 5, अब 5, अब 4, अब 3, आवाज निकालिए। और मानो Okay, good. So what Rajat is doing, just a second, is something very important. Again, Vinay can call it overthinking, which it is, but it's mindfulness. We are moving up and down the tension scale. हम अपने शरीर को सिखा रहे हैं कि हम टेंशन को वेरी कर सकते हैं, हम टेंशन को चेंज कर सकते हैं। Normally, there's a lot of helplessness associated with the moment of stammering, but this is allowing us to attach some agency to it, some control with it, some management with it. Okay, good. Nicely done, Rajat. Good, good, good. In the interest of time, I'm going to move to the rest of the 2 people over here. So, Vikas, आपके पास जाएं? अगला? या श्योर श्योर। ठीक है। तो कुछ बताइए अपने वीकेंड के बारे में, लाइफ के बारे में, क्या हो रहा है? ओके, तो मैं इस वीकेंड पर विपश्यना करने के लिए गया था। अ, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम छत्रपुर है। वहां पर एक दिवस दिव दिवसीय अ, अभी मैं सीधा फ्लो में बोलूं या फिर ट्राई किया जाए? नहीं, वो ये जब हकलाहट हुई तो नंबर 1 था या नंबर 2 था? ये असली थी या नकली थी? नंबर 2 था, असली। नंबर 2 असली थी। तो इसी से हाँ, काम करते हैं, फिर इसी से काम ओके, तक ठीक करते है। हैं। तो क्या शब्द था? या गुड गुड गुड, मैं फील इट अगेन। मैं ना आजकल शुद्ध हिंदी वाले शब्द बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मुझे भी सीखना है। बड़ा बड़ा ही मस्त वाला ब्लॉक आता है उसमें। गुड गुड। तो तो ओके, तो, तो वर्ड था दिव दिवशीय। ये दिवसीय रहता है या दिवशीय है, मतलब एनीवन नोज इट, ये स है या श? विकास विकास ये 2 दिन का था तो आपको बोलना चाहिए द्विदिवसीय। मेक इट मोर चैलेंजिंग। एक दिन का था, 2 दिन का था ये ये आपका ये शेड्यूल जो था। एक दिन
का था। हाँ तो तो बट दिवसीय, ठीक है, दिवसीय, दिवस मतलब दिन, दिवसीय मतलब 1 डे सेशन। ठीक है, तो ठीक है। ये दिवसीय। दिवसीय, इसी पे जाए। मैंने कभी ये शब्द नहीं सुना, आई एम लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा शब्द है। तो उसी शब्द के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। एक बार और सेंटेंस में यूज कीजिए वैसे ही हकलाइए उसके ऊपर। अगर असली हकलाहट नहीं महसूस हो रही तो वॉलंटरी भी कीजिए। बट लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस अगेन। ठीक है। मैं एक दिवसीय, एक या दो? एक या दो? दो, दो, ठीक है। कहाँ कहाँ के थे आपको? कहाँ पे फील हो रहा था आपको? दी दी पर दी पर जब ब्लॉक था तो हम्म, थोड़ा सा स्टमक टाइट हो गया था, और यहाँ से थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, फोर्स के साथ हम्म, निकल रहा था, हम्म। जिससे जबड़ा जब जबड़ा भी थोड़ा सा टाइट हो गया था। गुड। तो आपकी टेंशन जो है आपने जॉ में फील की, जीभ में फील की, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टक था या नहीं था? जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो जो में और स्टमक में था। ओके। मेनली इन स्टमक एंड मेनली इन द जॉ, ठीक है। तो वहीं पे फिर से टेंशन लोकेट करते हैं। ठीक है। लेकिन इस बार जो है, अगर आप असली में भी जा रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस है आपको, तो थोड़ा सा कम टेंशन महसूस करने की कोशिश कीजिए। ओके, मतलब थोड़ा वेरिएशन डालो क्या, ज्यादा से कम वाला। या थोड़ा सा वेरिएशन, यस, बेसिकली। गुड, दिस इज अ हार्ड वन। क्या नंबर है? मतलब मैं 6 तक चला गया था नियरली। 6 तक चले गए थे, अब 7 तक, अब 7 तक भी आई जाइए। हिट द स्केल। गुड, 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 एक्सलेंट। नाउ होल्ड इट राइट देयर। अब आप 6 तक जाइए, एक्चुअली 5 तक जाइए। ट्राई ट्राई फॉर 5, लेकिन 5 में आपको थोड़ी सी फैसिलिटी डालिए कि कैमरा पे देखिए, और अपना जो है मुंह जो है उसको उसको फोर्स मत कीजिए। फील द टेंशन ऑन द इनसाइड बट डोंट लोकेट इट ऑन द आउटसाइड। गुड, गुड, गुड। अगर आप फील कर रहे हैं कि 5 और 6 में क्या है, क्या अंतर है? हाँ, मतलब 5 में विजिबिलिटी फेस पर लेस किया था, बट अंदर सेम ही था। Good point. Good point. That's what we are trying to do. We're trying to reduce the visibility down to a 3. और अगर आप विजिबिलिटी भी अगर आप 4 तक जाएंगे तो कोरिलेशनली आपको महसूस होगा कि टेंशन भी थोड़ी सी कम है। ट्राई कीजिए, 4 का ट्राई कीजिए। दी 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 ओके, गुड। 5। दी दी दी। ओके, while you're doing it, 4, while you're doing it, 4, कैन यू फील कि टेंशन थोड़ी सी कम है? ये मतलब 4 और 5 में मेरा ज्यादा डिफरेंस लाने में अभी और काम करना नो पड़ेगा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 4, 4, 5, 4.5, ठीक है। नंबर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको, दिस इज अ वे टू हेल्प विद द अवेयरनेस, दैट्स ऑल। ओके, तो से 4, 4.5 आपने इनफ
Kya, you stopped, you took a pause, we talked a lot during the pause, you listed ki observationally aapko kahan pe tension feel hui, you played with a little bit. अब क्या करेंगे हम फिर से अटकेंगे सेम शब्द के ऊपर लाइटली हटकेंगे मतलब कि यू नो व्हाट 4 फील्स लाइक यूर एट 4.5 उसी लेवल पे ऊपर उसी लेवल के ऊपर वापस जाएंगे लेकिन आप अगर आप निकालेंगे अब ये शब्द जो निकालेंगे इसे बाउंस से निकालेंगे ठीक है सो ट्राई मैं एक सेम लेवल ऑफ टेंशन 4.5 वेरी गुड वेरी गुड अब आप हल्के से निकालिए बाउंस करके निकालिए दिवसीय Okay, good. So now you did the last part, which is the P, which is the plan to do it differently. You did it with a bounce. Okay, excellent. Nice job, Vikas. Okay, last is Arjun. That was a pull out on Arjun. बस मुझे विकास से पूछना है कि अगर वो 3 दिवसीय कार्यशाला होती तो वो क्या बोलेगा? 3 दिवसीय कार्यशाला कैसे बोलेंगे विकास? 3 दिवसीय हाँ दिवसीय हाँ, बिल्कुल ठीक है। फोन पे ट्राई करना और रिकॉर्ड करना कैंसिलेशन पे। चलिए All right. अर्जुन की बारी है। हाँ Let's try with you, Arjun. Whatever you want to say. Say something about your life that we don't know, and then we'll go from there. Sir, I would like to uh, uh, ask you a question. Would you be going for any of the matches in the T20 World Cup in USA this time? No, I'm not going for any of them, but I would like to go to one of them at some point in my life. Yeah. Becoming a very popular sport here as well. Yeah, for sure. So tell me something about your life a little bit, and then just do the same thing. Number 1 for the voluntary one, number 2 for the real one. Okay. Well, yeah. Yeah, I mean, my life is going on beautifully. I am enjoying doing the practices and following the TOPG and the move to courses. And I think I'm just enjoying the balance of work and family and giving time to stammering and TISA as well. I think everything is going on smoothly. Good, excellent. That is good to hear. Let's work with the word TISA because you raised your finger with 2 with the TISA. So let's use that word again. See if you can say it in any way you want. That's non-fluent. I want it to be non-fluent. TISA. Number 1, number 2. Two. Mixture of the two, sir. Mixture of the two, yeah. Yeah. Okay, so let's so where did you feel it? Between the tip of my tongue and the palate. Yeah, likely the tip of your tongue and the alveolar ridge because it's an alveolar sound. So the it's right there, the tip of the tongue and the alveolar ridge. Try that word again. See if you also feel it in a different location.
TISA. TISA. Okay. Yeah. Okay. I feel that even the voice is not coming out. Yeah. Okay. So you're feeling it at the articulatory level, but you're also feeling it at the glottal level, at the laryngeal level. Right. Okay. So you're feeling it in two places at once. Yes. What level were you at, do you think, in your mind on that 7-point Likert scale? Yeah, I think close to a 6. Close to a 6. 6. So that was a hard Yeah. one. Okay. Okay. Yeah. Let's see if we can hit that at like a 4 or a 5. TISA. Okay. Can you feel the difference proprioceptively between a 6 and a 5? 6 and a Yeah. 4 and a 5? Okay. Yes. Just to be sure, hit that at 6 again. TISA. Good. 4. TISA. Good. Now about a 3, a little bit softer, a little bit move towards the 1. TISA. Good. Let's try to do that word with a bounce. TISA. Very good. Good. Now use that word again. This time we'll go through the whole sequence again. You say the word with a voluntary stammer or a real one, whatever it is. Talk me through it. All this narration that we just did. Do it on your own. I got stuck. I thought like my tongue was pushing against this. I was stuck here. I was stuck there. I'm going to do it differently and then do it differently with a bounce. So own the steps on your own. TISA. I could feel my tongue getting a lot tighter. I could feel that there is no sort of free gliding movement. There was a sort of resistance in the mouth, and also I felt that my vocal cords have gone into a sort of a spasm. Now I'll try to relax the articulators a bit and try to get the voice going and try it out. TISA. Beautiful. TISA. Nicely done. Beautiful. You walk through the steps on your own. To the Vinayak's word, you overthought the hell out of it, which is great. You mindfully thought, you mindfully practice all those particular steps. So what Arjun just did was basically a cancellation. And you could do it like this, as in I'm a member of TISA. TISA. So what I've done is exactly what Arjun did, but I've skipped all of the overt verbal narration. But the verbal narration is very useful when you're doing it. So I would recommend you. So what is next steps, right? What you want to do next week? Next week, it would be good to brainstorm this, since we've tried this technique here. Some of you have tried it for the first time. एक बार इस हफ्ते जो है होमवर्क ये है कि आपको कैंसलेशन जो है कम से कम 2 बार करनी है, एक रियल लाइफ सिचुएशन में। और रियल लाइफ सिचुएशन जो है कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आपके विद इन कंफर्ट जोन में है या आउट ऑफ कंफर्ट जोन में भी है। ये हो सकता है कि एक सिचुएशन कंफर्ट जोन में हो, एक सिचुएशन कंफर्ट जोन से अलग हो। रिकॉर्ड करना है and do it a couple of times so you can create a self model of it. Basically, we're getting into now, this is now we're going to incorporate a bit of self video modeling in this. कि try कीजिए, किसी के साथ real life में try कीजिए। अगर आप voluntary stammering से cancellation कर रहे हैं, that's fine, that's easier. So whatever is easier, do the easy part, record yourself doing the cancellation, and we'll give you feedback on it.
or depending upon how your experience goes, maybe next week we'll try a pull out. Sounds good? Okay. The video self-modeling is very useful because उसमें क्या होगा कि if you have practiced your particular target behavior and created a video self-model of yourself, then watch it again next time when you sort of do a cancellation next time. Do it just before you do the cancellation next time. That's how video self-modeling is used. We're at 12:39 in my clock, so we're an hour 40 minutes into it. I need to head out, but hopefully this was helpful, guys. Useful in some way. Very helpful. Very helpful. Wonderful. So let's continue the momentum in this for next week. Like I said, the charge is very, very clear. And depending upon how you feel, maybe we'll repeat cancellation again. Maybe we'll do a pull out next week. Okay. Any last second questions, anybody? Last minute questions or comments about anything? Yeah, Rahul? सर एक जो और चीज अभी मैंने बहुत बार जो पहले ऑब्जर्व नहीं की थी, पर अब मैं अब जो है मैंने बहुत टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब जब स्टक होता हूँ किसी पर्टिकुलर शब्द पर, तो मैं ये मैं ये चीज पाता हूँ कि मेरा जो मैं उस तक जो है मैं बहाना हो करके कहीं और होता हूँ। मेरा जो थॉट जो है वो कहीं और चल रहा होता है कि मैं अगर जिस जगह पर हूँ, अगर मैं वहां पर बैठ करके उसी के बारे में पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे बोलूँ तो शायद मैं कम अगलाऊं। तो पर इसमें सर क्या होता है कि ये मैंने मोस्टली मैंने डीप ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या ऐसा होता है कि जहाँ पर मैं अभी हूँ, ऐसा पर मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो सडनली मैं उस ऑफिस पहुँच जाता हूँ अपने थॉट्स में, या पीछे कल की कोई क्या नाम बात सर, ये सर। So it's quite common. This is another way of distracting or avoidance. वो तो it can take several different forms. तो इस एक्सरसाइज के लिए आप एक जनरली पूछ रहे हैं, इस एक्सरसाइज की कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? मैं सर मैं ये मैं अपना जनरली पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, अगर मैं अगर मैं अभी बात करते ऐसा अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो फोकस है वो पूरा इधर ही है, तो मैं स्टैमर कम जो 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 हकलाहट है वो कम हो रही है। और जब मेरा ध्यान एकदम से कहीं पर और हो जाता है, तो जो स्टैमरिंग है वो ज्यादा होती है सर। वो इसलिए भी शायद होती है कि आपको जब किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किसी और जगह पे हैं और किसी बात और कर रहे हैं, बट आपके दिमाग में आप किसी और जगह पे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि इन द प्रोसेस की इट्स टेकिंग यू अवे फ्रॉम लैंग्वेज फॉर्मुलेशन, कि आपने क्यों जो कंटेंट है जो आपने कम्युनिकेट करना है, उस पे ध्यान ज्यादा नहीं है आपका। क्योंकि जब तक कंटेंट के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं होगा, तो आप जो है हकलाहट, वो दैट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। क्योंकि इफ यू आर प्री डिटर्मिनिंग कि मैंने किसी को कोई चीज बतानी है, क्या कोई चीज समझनी है, उसको कम्युनिकेट करना है, मैंने 3 चीजें बतानी है। इफ आई प्री डिसाइड द कंटेंट कि मुझे 3 चीजें, ये 3 पॉइंट जो है बनाने हैं, तो आपको ज्यादा देन you'll stay in the present a little bit longer. So that is part of the thing. By distracting yourself, you're also distracting yourself from the message of what you're trying to communicate. तो अगर आप
प्री लोड कर लें कि मैंने 3 चीजें जो है ये समझनी है, 3 चीजें जो है जो कम्युनिकेट करनी है, लिमिटेड लिस्ट जो है, दैट माइट बी हेल्पफुल ऑल्सो। क्या आपका क्या सवाल है रजत? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हाफ कैंसिलेशन होता है और जो रोल आउट होता है, इसमें शायद एक माइन्यूट डिफरेंस होता होगा शायद, मतलब इसमें शायद हाफ एक कैंसलेशन से, हाफ कैंसलेशन एंड रोल आउट में शायद। तो वेरी गुड क्वेश्चन। जो हमने जो अभी सीखा है, जो अभी प्रैक्टिस किया, ये फुल कैंसलेशन है। मतलब कि वर्ड को मत रोको, हकलाहट को मत रोको, उसके बाद जो है उसका थोड़ा सी अडेप्टेशन जो है उसके बाद होगी। हाफ कैंसलेशन में क्या हो रहा है कि जब हम वर्ड में जब हकलाना शुरू करते हैं, देन वी डोंट फिनिश द वर्ड। तो मतलब दैट्स अ हाफ कैंसलेशन। Pull out on the word would be matlab. That's the pull out. Cancellation में क्या होगा कि the difference is कि चाहे आधी कैंसलेशन है चाहे फुल कैंसलेशन है, ब्रेक है, ब्रेक है, एक साइलेंस है। लेकिन पुल आउट में साइलेंस नहीं है, क्योंकि पुल आउट में जो है, जैसे कि मैं जो है जो पुल आउट कर रहा हूं, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैं अभी ब्रेक नहीं ले रहा। लेकिन अगर मैं फुल फुल कैंसलेशन करूं, जैसे कि मैंने अभी की, या कि मैं आधी कैंसलेशन जैसे कि मैंने अभी की, उसमें ब्रेक है। यही अंतर है, वेदर इट्स अ फुल कैंसलेशन और हाफ कैंसलेशन। लेकिन फुल आउट में जो है ब्रेक नहीं है, साइलेंस नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ओके, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर वीक गाइस, बाय। Thank you थैंक so much. यू, Thank you so थैंक यू, much. बाय। Everyone, good night.